I want to encourage all the young children today with the Word of God. And everyone who is sitting here and is watching us online, I want to encourage you today. Everyone today wants to prosper, be rich, be successful in life. And you follow your own plans and you follow the worldly instructions, and many of you fail. बहुत से ऐसे हैं जो दुनिया में रिच होना चाहते हैं, सक्सेसफुल, कामयाब होना चाहते हैं, बहुत जल्दी ऊंचा होना चाहते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्लान्स उनके अपने होते हैं, वो खुदावंद की तरफ से नहीं होते. लेकिन जब जब आप पाक रूह को सीख करते हैं, जब जब आप खुदावंद के खौफ में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, then you become successful, then you prosper, then you become famous in the eyes of the Lord. Hallelujah. खुदावंद का खौफ जो है वो आपको मुबारक बनाता है. खुदावंद का खौफ जो है वो आपको कामयाब करता है. कलाम मुक़द्दस में जितनी भी हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई, अगर हम उन्हें ओबीडियंटली फॉलो करें, आपकी ओबीडियंस में ही आपकी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं. हालेलुया. आप ब्लेस्ड होंगे अगर आप खुदावंद के खौफ में अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे. When the doctors give you the instructions, you follow them. अगर डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि मीठा नहीं खाना, तो आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आप खाएंगे तो आपको जिस्मानी तौर पर नुकसान होगा. अगर डॉक्टर आपको मना करता है कि नमक नहीं खाना, तो आप नहीं खाएंगे उसको ताकि आपको जिस्मानी तौर पर नुकसान ना हो. कि आप वो काम नहीं करेंगे जो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, क्योंकि आपको पता है जिस्मानी तौर पर आप नुकसान पा सकते हैं. इसी तरह से मेरे अजीज़ और रूहानी तौर पर भी जो बातें कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं, the instructions that the Lord has given you in the Word of God, if we follow them, then spiritually you will be blessed, then spiritually you will grow, you will be spiritually active, and the Lord will bless you, and the world will see that these people live in the fear of the Lord. The righteous lifestyle, the instructions that the Word of God has given you to follow, we must follow them. Hallelujah. In Psalm 111 it is written, खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है, उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं, उसकी सिताइश अबद तक कायम हो. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever. A person who lives in the fear of the Lord. Hallelujah. Someone who always honors God, always praise God for all His accomplishments because he obediently followed Lord Jesus. Amen. Then the blessings will never leave you. You will be a blessed person in your household, in your community, in your church. So all you young people, if you want to live a blessed life, if you want to prosper, if you want to be rich, if you want to be successful, live your life in the fear of the Lord. Amen. Hallelujah. कदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद जो हम तेरे घर में गुजारे, हम तेरे दिल से तेरे शुक्र गुजार हैं खुदावंद. We are so thankful to you, Lord, that you gave us this opportunity, that we could stand in your house and praise you and give you all honor, and because you are worthy of it, Lord Jesus. We thank you that we are blessed, Lord Jesus. We thank you that your love and your care and your compassion always forgives us, Lord Jesus, and you give us new opportunities. You help us to prosper and be successful in this world, Lord. Lord, I ask and pray that you touch each and every one by the power of your Holy Spirit. तो अपने पाक रूह की कुदरत और कुव्वत से इन लोगों को छू खुदावन, जो हमें ऑनलाइन वॉच करे, जो यहाँ पर बैठे हैं, और तेरा खौफ तेरे लोगों के अंदर आए खुदावन. खुदा जब जब ये तेरे खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, when they live their life in the fear of the Lord, they shall receive the blessings, Lord, because when they follow you obediently, then they are blessed, Lord Jesus. Their obedience takes them closer to their blessings, Lord Jesus. The more they are obedient to your word, Lord, the more they will be blessed, Lord. Help us to be obedient to your word of God. Help us to follow the instructions to live a righteous lifestyle, Lord, and help us to lead many lost souls into your kingdom, Lord Jesus. If anyone today sitting here today, Lord Jesus, who has not accepted you as their personal Savior, let today's service be the service that will bring them to their knees, Lord. They will confess their sins. They will repent, Lord, and they will come near you, Lord Jesus. They will open their hearts to you, Lord Jesus. And everyone who wants to be successful, who wants to be prosper in this world, Lord, they shall seek you, Lord Jesus. Give them wisdom, give them knowledge, Lord, so they can be successful Christians and failure shall not come near them. In your mighty name we ask and pray. And the church say amen. Thank you, Jesus. Hallelujah.